Hello, my lovely Vidyashriyans. How are you all? I hope you all are doing well at home. Students, today in our SST class, we are going to discuss about our chapter number 5, the Northern Plains, which is second physical division of our country. So, without further delay, let's get started. The Northern Plains. First of all, the question arises, कि what do we mean by the northern plain? So, the northern plains are vast, flat, fertile land that stretch across the states of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. If we talk about the area, so it spreads over an area of 7 lakh square kilometer and it is about 2400 kilometers long and about 240 to 320 kilometer broad. And do you know why these plains are densely populated? These plains are densely populated due to fertile soil and abundance of water. So let's discuss more about the northern plains. First of all, we will discuss about the formation. Students, as you know, the northern plain was formed by the deposits brought by the three major Himalayan rivers, River Ganga, River Brahmaputra and River Indus and their tributaries. Tributaries क्या होता है बेटा? Tributary is actually a small river or stream that joins the another river. एक छोटी सी नदी होती है, छोटी सी नदियाँ मिल मिलकर ही एक लंबी स्ट्रीम बनाती है ना. हम ट्रिब्यूटरी का मीनिंग ऐसे याद रखेंगे, मीन्स द स्मॉल रिवर्स और द स्ट्रीम दैट ट्रिब्यूट्स देयर वाटर टू मेन रिवर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर that what do we mean by tributaries? The small rivers or the stream that tributes their water in the other rivers. Okay. So जो हमारी हिमालयन 3 rivers थी, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, वो जैसे ऊपर हिमालय से नीचे फुट हिल्स की तरफ बह रही थी, they are just carrying the sediments, silt, clay and the fertile soil which is known as alluvium. क्या होता है alluvium? Alluvium is actually the fertile soil which has all the nutrients which are useful for the cultivation. और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी एलुवियम सॉइल है वो ज़्यादा पाई जाती है. ठीक है, एंड एलुवियम सॉइल इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन. ठीक है, सो क्या हुआ, जब रिवर्स ऊपर हिमालय से नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी तो वो अपने साथ बेटा बहुत सारे सेडिमेंट्स जो होते हैं, ब्रोकन रॉक्स होती हैं, ठीक है, सिल्ट होती है, मिक्सचर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सब चीज़ें अपने साथ बहा कर लाई. अब देखो, कोई चीज़ ऊपर से आएगी तो वो नीचे ही रुकेगी ना, तो वो फुट हिल्स पे जाकर वो सब चीज़ें डिपॉजिट करके आगे की तरफ बह गई. ठीक है, और इसी तरह से जब एलुवियम हैज़ बिन डिपॉजिटेड इन द फुट हिल्स, जब एलुवियम वहाँ पर यानी कि वो जो जिसे कहते हैं ना फर्टाइल सॉइल जो फुट हिल्स में डिपॉजिट होती चली गई फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, नाउ दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज द फर्टाइल रीजन विच इज़ नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन्स. Okay students, I hope it is clear. Plains are broadly divided into 3 sections: the Indus or Punjab plains, the Ganga plains and the Brahmaputra plains. Now let's discuss about all these 3 sections one by one. Indus or Punjab plains. The western part of the northern plain formed by the Indus river and its 5 tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. Do you know the word Punjab itself is made up of 2 words, Panj plus Ab. Panj मतलब 5
Ab matlab water or river. So Punjab means the land of 5 rivers. This plain is dominated by Doabs. Doab means the land between 2 rivers. The Satluj is one of the main tributaries of the Indus. It rises in the Himalayas and flows through Himachal Pradesh and Punjab before joining the Indus in Pakistan. The water of Satluj is used extensively for irrigation. And do you know how this water is used for irrigation? Due to Bhakra Nangal Dam. The Bhakra Nangal Dam was built on the Satluj to provide the area with electricity and water for irrigation. Ganga Plains, which is the middle part of the northern plains and formed by the river Ganga and its tributaries. And which are the tributaries of Ganga? Number 1, Yamuna, Ghaggar and Kosi. These tributaries also form the middle part of northern plains with Ganga. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि गंगा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है. अब जैसे हमने पहला प्लेन पढ़ा दैट वाज इंडस प्लेन राइट और द पंजाब प्लेन्स, तो हमें पता था कि वो प्लेन्स हमारा पंजाब साइड पे है. ठीक है. तो गंगा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है, तो इट स्ट्रेचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल. ठीक है. उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक का जो एरिया है दैट इज नोन एज द गंगा प्लेन्स. अब लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर्स ऑफ रिवर गंगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी एट देवप्रयाग. ठीक है ना. विच इज द फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस जहाँ पर रिवर गंगा बनती है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी. अब आप पूछेंगे मैम ये कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, राइट? तो कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम. संगम मतलब मिलना, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नदियों का मिलना. ठीक है. दैट इज़ नोन एज कॉन्फ्लुएंस. ठीक है. तो अभी हम क्या समझे हैं इससे कि अलकनंदा और भगीरथी रिवर आपस में मिलकर गंगा ओरिजिनेट करती हैं. ठीक है. एंड देन दिस रिवर गंगा एंटर्स द प्लेन्स, एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार इन उत्तराखंड. ठीक है. फिर ये प्लेन्स में एंट्री करती है थ्रू हरिद्वार इन उत्तराखंड. ठीक है. देन इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. अब बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हुए इट ऑल्सो मीट्स विद द अनदर ट्रिब्यूटरी, द Yamuna, which is the major tributary of Ganga, and Yamuna also rises in the Himalayas and passes through from Delhi, Mathura and Agra before joining river Ganga. तो क्या होता है, अब आपको मैं वो दिखाती हूँ. देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है. Here two rivers are meet. What do we mean by confluence? संगम मतलब when two rivers are meeting together at a point, that point is known as confluence. अब भूलेंगे तो नहीं कि what do we mean by confluence. और हमने देखा कि रिवर गंगा का कितनी बार संगम होता है. सबसे पहला संगम होता है देवप्रयाग नाम की जगह पर, जहाँ पर रिवर अलकनंदा और भगीरथी मिलकर रिवर गंगा बनाती है. ठीक है. और दूसरा संगम होता है प्रयाग संगम की जगह पर इलाहाबाद में. ठीक है ना, जहाँ पर गंगा रिवर यमुना से मिलती है. एंड देन इट मूव्स एंड एंटर्स इन वेस्ट बंगाल. देन इन वेस्ट बंगाल इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस. ठीक है. जब ये वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांच. वन ब्रांच इन वेस्ट बंगाल इज नोन एज हुगली. ठीक है. आपको ये जो वेस्ट बंगाल में जो ब्रांच दिख रही है दैट इज हुगली. ठीक है. दैट इज हुगली. ठीक है. एंड द अनदर ब्रांच विच गोज टू बांग्लादेश, ठीक है, दैट इज नोन एज पद्मा. ठीक है. जो बांग्लादेश में हम ब्रांच देखते हैं वो पद्मा कहलाती है. बट पद्मा वो ऐसे ही नहीं कहलाती है.
Padma bhi is also the name of confluence of two rivers. कौन सी rivers? ये हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, which is our third plains, Brahmaputra plains. Okay students, so let's discuss about that also. I hope these all things are clear. So जल्दी से एक quick review ले लेते हैं for river Ganga or the Ganga plains. So what happened in Ganga basin? At place called Devprayag in Uttarakhand, rivers Alaknanda and Bhagirathi join each other and form river Ganga. Then the Ganga enters the plains at Haridwar in Uttarakhand. Yamuna, which is the major tributary of Ganga, rises in the Himalayas too, passes through from Delhi, Mathura and Agra before meeting Ganga. When the Ganga river and the Yamuna river meets at Prayag Sangam in Allahabad, that meeting point of two rivers is known as confluence. Okay, then it moves towards the West Bengal and it splits into two main branches, Hooghly in West Bengal and Padma in Bangladesh. Okay, the Brahmaputra plains. The third part of the northern plains, or we can say the eastern part of the northern plains, formed by the Brahmaputra river and its tributaries. Like the Satluj and the Ganga river, it also originates from Himalayas. It enters India at Arunachal Pradesh and flows through Assam into Bangladesh. In Bangladesh, it joins the river Ganga and form river Padma. Now you get to know that what do we mean by Padma? Padma river कैसे बनी? Padma river is actually the combined river of river Ganga and Brahmaputra. After joining, this combined river means river Padma finally flows into the Bay of Bengal. And there it forms the largest delta in the world, the Sundarbans Delta. Students, चलें एक बार ब्रह्मपुत्रा बेसिन को भी हम रिवाइज कर लेते हैं. So, Brahmaputra basin basically made third part of the northern plains, which is the eastern part of northern plains. ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्रा river है, ये it also originates from Himalayas. ठीक है, and it enters in the plains from Arunachal Pradesh. ठीक है, and flows through Assam into Bangladesh. ठीक है, बांग्लादेश याद आया? हमारी जो एक गंगा की जो एक ब्रांच वहाँ बांग्लादेश में गई थी, उसके साथ मिलकर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड गंगा आपस में मिल जाते हैं एंड फॉर्म्स रिवर पद्मा. ठीक है, एंड फाइनली दैट रिवर पद्मा फ्लोज टू बे ऑफ बंगाल to form Sundarbans Delta, which is the world's largest delta. Okay students, I hope the things are clear. All the three plains are clear now. Okay, now let's discuss about life in the northern plains. Students, as you know, agriculture is one of the important occupation of the people living in the northern plains. Farmers grow rice, wheat, pulses, sugarcane, fruits and vegetables there. Punjab, which is the largest producer of wheat in India, and rice is mainly grown in the hot and wet regions of West Bengal and Bihar. Sugarcane and jute are grown as cash crops there, whereas West Bengal and Assam are famous for tea cultivation. Industries is another important occupation of the people living in the northern plains. Textile industries, sugar industry, animal husbandry and dairy farming are the important activities. In the cities, people take up another jobs as well. The northern plains enjoys a rich and varied culture. Each state has its own special foods, traditional clothes, festivals and style of art, dance and music. Food. People in the northern plains eat a wide variety of food.
Wheat is the main cereal eaten in the northern and the western parts. In Bengal and Assam, rice and fish is widely consumed. Kebab is the meat-based dish common in Uttar Pradesh, whereas tandoori chicken is a popular dish of Punjab. Litti is the traditional food in Bihar, whereas the traditional Assamese meal with rice, vegetable and fish is there. The hilsa fish cooked with mustard seeds is a popular delicacy in West Bengal. If we talk about the culture of North India, so Diwali, Dashera, Holi, Eid and Christmas are widely celebrated in this region. Guru Purab and Baisakhi are special festivals of Punjab. Chhat is celebrated in Bihar. Durga Puja in Bengal and Bihu in Assam are the important festivals. Handicrafts. Each region of the northern plains has its own special forms of handicrafts. Whereas chikankari embroidery of Lucknow and Fulkari embroidery of Punjab is very famous. Other handicrafts in the northern plains are Madhubani painting from Mithila region, Bihar, and terracotta horses from Bishanpur, West Bengal are also famous. Okay students, this is up for today's lecture. I hope you understand all the topics related to it. Now it's homework time. What you need to do in your homework? In your homework, you need to write down the origin point of river Indus, river Ganga and river Brahmaputra in your rough notebook. Okay. All these three rivers are responsible for formation of northern plains, right? So let's do it. चलिए मिलते हैं in the next video with another chapter. Till then, goodbye.